आज लाइव में थोड़ा सा देरी हो गया। रात के बज रहे हैं 12:30 और अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डैश के। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये जो चैप्टर है ये क्या है? तो as you have read earlier, oxygen O2 is utilized by the organism to indirectly break down nutrient molecules like glucose to derive energy and for performing various activities. Carbon dioxide, which is harmful, is also released during the above catabolic reactions. It is therefore evident that O2 has to be continuously provided to the cells and carbon dioxide produced by the cells have to be released out. तो जो ऑक्सीजन है वो हमेशा आपको मेटा कैटाबोलिक रिएक्शंस के लिए प्रोवाइड करते रहना पड़ेगा। ओह शिट, once a minute. Okay, so as you have read earlier, oxygen is utilized by the organism to indirectly break down करता है ऑक्सीजन nutrients को like glucose and to derive energy for performing various activities. तो वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए और इस एनर्जी को आप कह सकते हैं कि एक तरह से ऑक्सीजन ही प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसी को हम इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करते हैं, उसी से ग्लूकोज और डिराइव एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड which is harmful is also released during the above catabolic reaction. above जो catabolic reaction है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। It is therefore evident that O2 has to be continuously provided to the cells and carbon dioxide produced by the cells have to be released out. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है आफ्टर द कैटाबोलिक रिएक्शन उसको हमेशा आपको निकालना जरूरी है। This process of exchange of O2
फ्रॉम द एटमोसफियर विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। इसी को लेन देन की संपर्क को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं, जो कि कॉमनली है रेस्पिरेशन बोला जाता है। सो प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट and place your hand on your chest so place your hands on chest and you can feel the chest moving up and down. You can feel the chest moving up and down. You know that this is due to breathing. How do we breathe? The respiratory organs जो होता है and the mechanism of breathing are described in the following section of this chapter. तो कैसे हम लोग मतलब ब्रीथ करते हैं, यही इसका बारे में आज चैप्टर है, ये हम पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट्स एंड लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Lower invertebrates like sponges, coelentrates, flatworms exchange O2 with CO2 by simple diffusion over their entire body surface. जैसे कि coelentrates, sponges, flatworms है, ये O2 with CO2 exchange करते हैं by simple diffusion over their entire body surface. Earthworm use their moist cuticle and insects have a network of tubes. Insect का network of tubes है जो कि tracheal tubes बोला जाता है. Atmosphere air within the body. Special vascularized structure called gills are used by the most aquatic arthropods and terrestrial forms for the exchange of gases. Aquatic जो arthropods mollusk है वो vascularized bag called lungs वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मोटा मोटा तौर पे लोअर जो इन्वर्टेब्रेट्स है लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, फ्लैटवर्म एक्सचेंज O2 with CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन से ही एक्सचेंज कर लेते हैं O2 और CO2। और जो क्या है, आपको मॉइस्ट कटिकल एंड इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। और इंसेक्ट का जो है वो उसका ट्यूब रहता है इंसेक्ट का, ठीक है, टू ट्रांसफर एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स आर यूज्ड बाय द मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं वो गिल्स यूज करते हैं। और बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स और वैस्कुलराइज बैग जो लंग्स है वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में एक्सचेंज करते हैं मॉलस्क, ठीक है। एंड मॉलस्क वेरएज वैस्कुलर बैग और लंग्स आर यूज्ड बाय टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अगर आपको टेरेस्ट्रियल में गैसेस एक्सचेंज करना है तो आपके पास लंग्स होना जरूरी है, जो कि हमारे है। Among vertebrates, fishes use gills। among vertebrates में जो है fishes gills यूज करता है। whereas reptiles, birds and mammals respire through lungs, ठीक है। amphibians like frog can respire through their moist skin. Also mammals have a well developed respiratory system। तो vertebrates में जो है वो fish यूज करता है gills, whereas reptiles, बर्ड्स और मैमल्स लंग्स से रेस्पायर करते हैं।
एम्फीबियंस जो फ्रॉग है कैन रिस्पेक्ट थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन ऑल्सो। एम्फीबियन फ्रॉग उसको मॉइस्ट स्किन से भी रिस्पायर कर सकता है। एंड मैमल्स हैव अ वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैमल्स में वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, अब है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो चलिए, वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। हम लोग का जो है वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप। तो हमारा जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है वो अपर लिप में ओपन अप है और इट लीड्स टू नसल चेम्बर थ्रू द नसल पैसेज। ये नसल चेम्बर में जाता है थ्रू नसल्स पैसेज। द नसल चेम्बर ओपन्स इनटू नासोफैरिंग्स। तो अपर लिप में नॉस्ट्रिल है और जो फिर लीड्स टू नसल चेम्बर, नए नसल चेम्बर में जाता है नसल पैसेज के थ्रू। नसल चेम्बर क्या है? ओपन्स इनटू नासोफैरिंग्स। पहले नासोफैरिंग्स में ओपन होते हैं विच इज़ अ पोर्शन ऑफ फैरिंग्स द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, जो कि कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर का। नासोफैरिंग्स ओपन थ्रू ग्लॉटिस ऑफ द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। नासोफैरिंग्स जो है ग्लॉटिस से होते हुए लैरिंग्स रीजन में जाता है ट्रैकिया के थ्रू। लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स which helps in sound production and hence called the sound box। लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस आपका बॉक्स है जो कि साउंड हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन, हम लोग जो आवाज़ में बात कर रहे हैं, और ये इसको साउंड बॉक्स बोला जाता है। ड्यूरिंग swallowing glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of food into the larynx। हाँ, जब आप सैलो करते हैं तो उसमें आपका फूड, ताकि फूड पाइप में ना चले जाए, इसलिए फूड को ना जाए, इसलिए ग्लॉटिस को एपीग्लॉटिस से कवर अप किया जाता है। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरासिक कैविटी। ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब होने के नाते एक्सटेंड होता है मिड थोरासिक कैविटी में, which divides at the level of fifth thoracic vertebra into the right and the left primary bronchi। राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। each bronchi undergoes repeated division to form the secondary and tertiary bronchi and bronchioles ending up in a thin terminal bronchioles। ठीक है, अभी थोड़ा 5 मिनट के लिए इमरजेंसी। मैं
Yes guys, so we are back. So अभी हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए, we have a pair of external nostrils opening out above the upper lips. It leads to a nasal chamber. Through the nasal passage, the nasal chamber opens into nasopharynx, which is a portion of the pharynx. The nasal chamber opens into nasopharynx, which is a portion of the pharynx. The common passage for food and air. So pharynx is the common passage for food and air. Nasopharynx opens through glottis of the larynx region into the trachea. Larynx is a cartilaginous box. So larynx is the cartilaginous box and which helps in sound production and hence called the sound box. During swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of food into the larynx. Trachea is a straight tube extending up to the mid-thoracic cavity, which divides at the level of fifth thoracic vertebra into a right and the left primary bronchi. So trachea at the level of fifth thoracic vertebra divides into left and right primary bronchi. Left and right पर primary bronchi पर divide हो जाता है कौन? ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है एट द लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी bronchi. Okay, left and right primary bronchi. During swallowing, glottis can be covered by a each bronchi undergoes repeated division to form the secondary and tertiary bronchi. Each bronchi undergoes repeated division to form the secondary and tertiary bronchi and bronchioles ending up in a very thin terminal bronchioles. तो ट्रैकिया जो है वो मिड थोरासिक फिफ्थ थोरासिक कैविटी में डिवाइड होता है ब्रोंकाई में bronchi में left and right primary bronchi. Each bronchi undergoes repeated division of secondary and from tertiary bronchi and bronchioles ending up very thin bronchioles. तो bronchi divide होता है bronchioles में. The trachea, primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous ring. तो जितना भी ट्रैकिया से ब्रोंकियोल्स तक है वो सब इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से सपोर्टेड है. और हाँ, ईच टर्मिनल ब्रोंकाइल गिव राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन irregular walled and vascularized bag like structure that is alveoli. तो एल्वियोली तक पहुँचते पहुँचते आपका इतना सफ़र लंबा सफ़र है. पहले तो नोस्ट्रिल्स, नसल चेम्बर, थ्रू नसल पैसेज, नासोफैरिंग्स, नसल चेम्बर से नासोफैरिंग्स, फैरिंग्स, फिर आपका वो ग्लॉटिस आता है, उसमें आपका एपिग्लॉटिस कवर करता है साउंड बॉक्स, फिर ट्रैकिया, फिर मिड फिफ्थ थोरासिक कैविटी से ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकियोल्स और फिर जाकर एल्वियोली, इरेगुलर वॉल्ड और वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको एल्वियोली बोला गया है. द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकी, ब्रोंकाइल्स एंड एल्वियोली कंप्राइज द लंग. ये जो ब्रांचिंग नेटवर्क है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोली यही कंप्राइज करता है लंग्स को. We have two lungs which are covered by a double layered pleura with pleural fluid between them. Double layered pleura से cover up है जो कि we have two lungs which are covered by a double layered pleura. Double layered pleura से covered है with pleural fluid between them. Pleural fluid इसके बीच में है. It reduces friction on the lung surface. Lung surface में friction reduce करता है. ठीक है. The outer pleural membrane is in close contact with the thoracic lining, whereas the inner pleural membrane is in contact with the lung surface. ठीक है.
The outer pleural membrane is in close contact with the thoracic lining. Thoracic lining से outer pleural membrane contact में है और inner line is in contact with the lung surface. The part starting with the external nostril up to the terminal bronchial constitute the conducting part, whereas the alveoli and the ducts from the respiratory or exchange part ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो कंडक्टिंग पार्ट आपका स्टार्ट हो रहा है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से. कंडक्टिंग पार्ट आपका स्टार्ट हो रहा है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से और अप टू टर्मिनल ब्रोंकाइल्स. टर्मिनल ब्रोंकाइल्स तक कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है और इसको बोला जाता है कंडक्टिंग पार्ट. और जो एक्सचेंज पार्ट है, एक्सचेंज पार्ट जिसको बोलते हैं, वो होता है आपका एल्वियोली से. एल्वियोली से कहाँ तक? एल्वियोली और उसके एंड रेस्पिरेटरी डक्ट्स. रेस्पिरेटरी डक्ट्स तक उसका होता है, रेस्पिरेटरी डक्ट्स. ठीक है. और फिर होता है क्या करता है वो, द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट्स द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोली. कंडक्टिंग पार्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है, कंडक्टिंग पार्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोली और क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स. फॉरेन पार्टिकल्स से क्लियर करता है. ह्यूमिडिफाइज एंड ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर. और ये क्या करता है, और एयर को भी बॉडी टेम्परेचर में लाकर खड़ा कर देता है. एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूशन ऑफ O2 एंड CO2. एक्सचेंज पार्ट जो है वही एक्चुअल डिफ्यूशन है O2 और CO2. एक्सचेंज पार्ट जो है वही एक्चुअल डिफ्यूशन है ऑफ O2 एंड CO2. ठीक है. The atmospheric air really clears it from foreign particles, humidifies and also brings the air to body temperature. तो conducting part जो है वो क्या करता है, brings the atmospheric air to the body, clears it from foreign particles and humidifies and brings the air to the body temperature. ठीक है, बॉडी टेम्परेचर में ला देता है. बस इतना आपको याद रखने की ज़रूरत है. एक्सचेंज पार्ट इज द एक्चुअल साइट ऑफ diffusion of O2 and CO2 between blood and atmospheric air. The lungs are situated in the thoracic chamber, which is anatomically an airtight chamber. lungs जो है वो situated है thoracic chamber में, जो कि airtight chamber है. The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, and laterally by the ribs on the lower side of the dome-shaped diaphragm. The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, laterally by the ribs, and on the lower side by the dome-shaped diaphragm. The anatomical setup of the lungs in thorax in such a way that change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lung cavity. ऐसा anatomical setup किया गया है कि lungs में such that any change in the volume of the thoracic cavity, जो भी thoracic cavity में वॉल्यूम चेंज होगा, will be reflected in the लंग में रिफ्लेक्ट होगा पल्मोनरी एक्टिविटी में. अगर thoracic चैम्बर में कुछ भी चेंज होता है तो रिफ्लेक्ट होगा लंग में पल्मोनरी कैविटी में. Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume. ये चेंज जरूरी है क्योंकि हम पल्मोनरी वॉल्यूम को डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर सकते. अब है रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स. क्या क्या रेस्पिरेशन के स्टेप्स है वो हम जानेंगे अभी. ठीक है. breathing or pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out. जो CO2 ऑलरेडी सेल्स ने यूज़ कर लिया वो एल्वियोली में आके उसको निकलना भी पड़ता है. डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन. तो जो डिफ्यूजन होता है O2 और CO2 के बीच वो एल्वियोलर मेम्ब्रेन में होता है. ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड भी गैस ट्रांसपोर्ट कर देता है. डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू
utilization of O2 by the cells for catabolic reaction and resultant release of carbon dioxide। ठीक है, तो ये सब आपको मैं बता दिया, ये बात दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। चलिए मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग शुरू करते हैं। Breathing involves two stages. One is inspiration, during which atmosphere is drawn in। इंस्पिरेशन मतलब एटमोस्फेरिक एयर अंदर घुसाते हैं। एंड एक्सपायरेशन बाय व्हिच एल्वेलर एयर इज रिलीज्ड आउट। और एक्सपायरेशन मतलब जो कि एल्वेलर एयर रिलीज्ड आउट होता है। The movement of air into and out of the lung is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmospheric air। प्रेशर ग्रेडियंट से ही एयर इन एंड आउट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इंस्पिरेशन कैन ऑकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है इंट्रापल्मोनरी, इंस्पिरेशन कब होगा? इंस्पिरेशन कैन ऑकर व्हेन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, when intrapulmonary pressure is less than atmospheric pressure। एटमोस्फेरिक प्रेशर से जब लेस होगा तब इंस्पिरेशन होगा। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जब लेस होगा तभी एटमोस्फेयर अंदर घुसेगा। देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग विद रिस्पेक्ट टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। सिमिलरली प्रेशर, तो ये नेगेटिव में जाता है। ठीक है, सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure। Similarly, expiration takes place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure। तो सिमिलरली क्या है, एक्सपायरेशन तब जब इंस्पिरेशन होता है तब आपका इंट्रापल्मोनरी जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता है, लेस होता है, और जब एक्सपायरेशन होता है तब यही हाई होता है। ठीक है, हाई। The diaphragm and a specialized set of muscle external intercostal leaves between help in generation of such gradients। Inspiration is initiated by contraception of diaphragm, which increases the volume of thoracic chamber in an anterior posterior axis। The contraction of external intercostal muscle, contraction of external intercostal muscle lifts up the rib and the sternum, causing an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis। इसको थोड़ा आराम से बोलता हूँ। द डायफ्राम, जो डायफ्राम है, एंड स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल, जो डायफ्राम एंड स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल बिटवीन द रिब्स जो मसल्स है, हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। तो जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर लेस हुआ था वो कैसे हुआ था वही बता रहा है। ठीक है, helps in generation the diaphragm and a specialized set of muscle external and intercostal muscle between the ribs helps in generation of such gradient। Inspiration is initiated by the contraction of diaphragm। contraction जब होता है diaphragm का, inspiration तब होता है which increases the thoracic chamber। जैसे diaphragm contracts होता है thoracic chamber increase होता है। ठीक है, thoracic chamber increase होता है which increases the volume of the thoracic chamber in the anterior posterior axis। anterior posterior axis में change होता है। the contraction of external intercostal muscle, contraction जो होता है external intercostal muscle lifts up the rib and the sternum, causing an increase in the volume of the thoracic chamber in dorsoventral axis।
The overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in pulmonary volume. The overall increase जो होता है thoracic volume में वो कॉज करता है pulmonary volume को increase करने में. Increase in pulmonary volume decrease the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure which forces the air from outside to move into the lungs. तो ऐसा होता है. thoracic chamber का जो volume है वो increase होता है और फिर पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज होता है और पल्मोनरी वॉल्यूम जैसे ही इंक्रीज होता है तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेस होता है और वो बाहर का एयर अंदर घुस जाता है. रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम, और इसमें डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट रहता है और इंटरकोस्टल मसल के रिब्स भी कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं. Relaxation of the diaphragm and the intercostal muscle returns the diaphragm and sternum to their normal position and reduce the thoracic volume and thereby pulmonary volume. तो जब रिलैक्स करता है तो ये सब जो पल्मोनरी वॉल्यूम होता है वो भी लेस हो जाता है, थोरेसिक वॉल्यूम भी लेस हो जाता है क्योंकि डायफ्राम और रिब्स भी रिलैक्स कर रहा होता है. बट ये क्या करता है, इंटरपल्मोनरी प्रेशर को इंक्रीज कर देता है स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉजिंग द एक्सपल्शन ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स. ठीक है. We have the ability to increase the strength of the inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen. Additional muscle जो abdomen में है उससे हम बढ़ा या चढ़ा सकते हैं. 12 to 16 times per minute the volume of air involved in breathing movements can be estimated by using a spirometer which helps in clinical assessment of pulmonary function. तो ये जो volume of air है involved in breathing movements can be estimated by using a spirometer which helps in clinical assessment of pulmonary functions. तो ये था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का सब टॉपिक है, वो करने के बाद हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस में चले जाएंगे. लेकिन अभी हम लोग फिर से एक बार मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग प्योर शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगा क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं फिर से. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इसमें क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में breathing involves two stages: inspiration, during which atmospheric air is drawn in and air is drawn in and air is out, and okay, air is drawn in and which air is out. The movement of air into and out of the lung is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere. Inspiration can occur if the pressure within the lung is less than the atmospheric pressure. There is a negative pressure in the lungs with respect to atmospheric pressure. Similarly, expiration takes place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. The diaphragm and the specialized set of muscle, external intercostal muscle between the ribs, helps in such maintain of gradients. Inspiration is initiated by the contraction of diaphragm, which increases the volume of thoracic chamber in the antero-posterior axis. The contraction of external intercostal muscle lifts up the ribs and the sternum, causing an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis. The overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in pulmonary volume. An increase in pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which forces the air from outside to move into the lungs. बस ठीक है. Relaxation of the diaphragm and the intercostal muscle returns the diaphragm and sternum to their normal position and reduce the thoracic volume and thereby the pulmonary volume. This leads to an increase in intrapulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure, causing the expulsion of air from the lungs. Expiration, we have the ability to increase the strength of the inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen. On an average, a healthy human breathes 12 to 16 times per minute. The volume of air involved in breathing movements can be estimated by using a spirometer, which helps in clinical assessment of pulmonary activities. बस यही था. अब नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी.
चलिए आप लोग थोड़ा पानी पी लीजिए। चलिए अब टाइडल वॉल्यूम पढ़ेंगे अपन लोग। Volume of air inspired or expired during a normal respiration, it is approx 500 ml a healthy man। तो टाइडल वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में फंसा देगा कि ये है इंस्पिरेशन, तो ये 500 ml है। इंस्पायर और हेल्दी मैन कैन इंस्पायर अ हेल्दी मैन can inspire or expire up to 6,000 to 8,000 ml of air per minute। per minute 6,000 to 8,000 ml of air per minute इंस्पायर और एक्सपायर कर सकते हैं। ठीक है, tidal volume volume of air inspired or expired during a normal respiration, it is approximately 500 ml। A healthy man can inspire or expire approximately 6,000 to 8,000 ml of air per minute। Now inspiratory reserve volume। Okay, inspiratory reserve volume
additional volume of air a person can inspire by a forcible shit. Oh, এটা করেছে। Okay, tidal volume inspiratory reserve volume, additional volume of air a person can inspire by forcible inspiration. This averages 250 2500 ml to 3000 ml. Okay, wait. Volume of air inspired or additional volume of air जो कि a person can inspire by forcible inspiration. These average 2500 ml to 3000 ml. What is expiratory reserve volume? Expiratory reserve volume, additional volume of air a person can expire by forcible expiration, 1000 to 1100. And IRV 2500 ml to 3000 ml, or ERV 1000 ml to 1100 ml. Forcible inspiration. Next, residual volume. Volume of air remaining in the lungs even after a forcible expiration. Volume of air remaining in the lungs even after a forcible expiration. This averages 1100 to 1200. तो वॉल्यूम ऑफ एयर जो रह जाता है लंग्स में आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन, ऐसे छोड़ते हो उसके बाद जो रह जाता है वो होता है 1100 to 1200 ml. By adding up a few respiratory volumes described above, one can derive various pulmonary capacity which can be used in clinical diagnosis. Now, IC, inspiratory capacity, total volume of air a person can inspire after normal expiration. Total volume of air a person can inspire after a normal expiration. नॉर्मल आप एक्सपायरेशन के बाद जो आप कर सकते हैं, मतलब इंस्पायर कर सकते हैं, उसको बोला जाता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. Total volume of air a person can inspire after normal expiration. This includes tidal volume and inspiratory reserve volume. तो tidal volume plus IRV, IC equals to
IRTB plus IRB. IC equals to TB plus IRB. DC equals to TB IRB. EC total volume where a person can expire person has after normal inspiration. This includes TB plus ERB. EC TB plus what is IRB? Inspiration is a volume total a person can inspire. Additional volume of air a person can inspire after forcible expiration. Additional volume of IC a volume can inspire after normal expiration. So forcible normal. Now FRC functional residual volume capacity. Volume of air that remain in lungs after normal expiration. This includes ERV expiratory reserve volume प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रिजर्व वॉल्यूम में क्या होता है, आप फोर्सिबल एक्सपायरेशन करते हैं और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में होता है आप नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हैं, जो रह जाता है। ठीक है। वाइटल कैपेसिटी द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। द मैक्सिमम वॉल्यूम जो ब्रीद इन कर सकते हैं आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन वो होता है ERV TB IRV। टोटल लंग कैपेसिटी RV ERV TB तो रेसिडुअल वॉल्यूम तक सब आपको प्लस कर देना है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल वॉल्यूम of air accommodate in the lungs at the end of a forced inspiration। फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद जो रहता है वो इंक्लूड होता है TB ERV IRV और वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। फिर से एक बार मैं बता दूंगा आपको टोटल जो है पूरा, ठीक है, पूरा एक बार बता दे रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं टाइडल वॉल्यूम से। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल respiration, it is approximately 500 ml. A healthy man can inspire or expire approximately 6000 to 8000 ml of air per minute. Inspiratory reserve volume, additional volume of air a person can inspire by a forcible inspiration. This average 2500 ml to 3000 ml. Expiratory reserve volume, additional volume of air a person can expire by a forcible expiration.
This average 1000 ml to 1100 ml. Residual volume, volume of air remaining in the lungs even after a forcible expiration. This averages 1100 ml to 1200. तो सभी आपका एक ट्रिक बता रहा हूँ. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से शुरू होकर सभी आपका फोर्सिबल वर्ड यूज़ हुआ. ठीक है. और रेसिडुअल वॉल्यूम में आपका क्या हुआ, उसमें आपका फोर्सिबल, उसमें आपका एयर जो रह गया आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन वो. फिर आता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. इसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर. इसमें नॉर्मल शुरू होगा, नॉर्मल एक्सपायरेशन. और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में आप नॉर्मल एक्सपायरेशन कर रहे हो. दिस इंक्लूड्स टीवी प्लस आईआरवी टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. फिर आता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी वॉल्यूम एक्सपायर्ड बाय नॉर्मल इंस्पिरेशन. ये होता है उल्टा. फिर इसमें आप टीवी प्लस ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. फिर आता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. इसमें आप रेसिडुअल वॉल्यूम जो था उसका आप रेसिप्रोकल करोगे. जैसे वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन. नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल एक्सपायरेशन ये वर्ड आपका दिमाग में रहना चाहिए. और ये इंक्लूड करता है टीवी प्लस आरवी, मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम. अब है वाइटल कैपेसिटी, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन. फोर्स्ड एक्सपायरेशन मतलब करने के बाद जो लोग ब्रीथ कर रहे हैं वो, ये इंक्लूड होता है एक्सपायरेशन वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है. ईआरवी, टीवी और आरवी, इसमें रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं है. Total lung capacity, total volume of air accumulated in the lungs at the end of forced expiration, inspiration. ठीक है. फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद जो लंग में है ये इंक्लूड होता है चारों, आरवी, टीवी, ईआरवी और प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम. ठीक है. अब है एक्सचेंज ऑफ गैसेस. अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ये क्या है भाई, एल्वेली एट द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एल्वेली एक प्राइमरी साइट है गैस एक्सचेंज के लिए. एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो ऑकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू. ब्लड और टिश्यू में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं. ठीक है. O2 and CO2 are exchanged in these sites by simple diffusion mainly based on pressure or concentration gradient. O2 और CO2 जो है वो मेनली डिफ्यूज होते हैं बाय प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बदौलत. Solubility of the gases as well as thickness of the membrane involved in diffusion are also important factors that can affect the rate of diffusion. Solubility of the जो गैस का है और जो मेम्ब्रेन का थिकनेस है, जो मेम्ब्रेन का थिकनेस है वो बहुत ही मैटर करता है इसमें रेट ऑफ डिफ्यूशन में. अगर ज़्यादा ही पतला होकर फट गया तो आदमी मर जाएगा. प्रेशर contributed by an individual gas in a mixture of gases is called partial pressure. प्रेशर जो कंट्रीब्यूट किया है इंडिविजुअल गैस और मिक्सचर ऑफ गैसेस में उसको पार्शियल प्रेशर बोला जाता है and is represented as PO2 for oxygen and PCO2 for carbon dioxide. PO2 for oxygen and PCO2 for carbon dioxide. Partial pressure of these two gases in the atmospheric air and the two sites of diffusion are given in table 17.1 and figure 17.3. The data given in the table clearly indicates a concentration gradient for oxygen from alveoli to blood and blood to tissue. Alveoli से blood और blood to tissues में इसका gradient दिया है. alveoli से blood, blood से टिश्यू तक ऐसे ही जाता है. अगर आप अब देखोगे ऑक्सीजन कैसे जाता है एल्वियोली से ब्लड में, फिर ब्लड में जाके वो कैटाबोलिज्म करता है. एटमॉस्फेरिक एयर अगर 159 रेस्पिरेटरी गैस O2, ये आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि इस बार नीट में आया था. रेस्पिरेटरी गैस O2 एटमॉस्फेरिक एयर 159, एल्वियोली में तब रहेगा 104, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड 40 और ब्लड ऑक्सीजनेटेड 159
104, 40, 95, 40, 159। आप ऐसे याद रखो, एटमॉस्फेरिक एयर एल्वियोली ब्लड डीऑक्सीनेटेड 40 था, ब्लड जब ऑक्सीनेटेड होगा 95, टिश्यू में 40 गया। ठीक है, चलिए O2 एटमॉस्फेरिक एयर 159, एटमॉस्फेरिक एयर एल्वियोली ब्लड डीऑक्सीनेटेड, ब्लड ऑक्सीनेटेड टिश्यू। एटमॉस्फेरिक एयर पहले तो ये लर्न करो, एटमॉस्फेरिक एयर सॉरी atmospheric air alveoli, alveoli to blood, blood to alveoli to blood, blood, which blood? Deoxygenated blood, then oxygenated blood, then tissue. Atmospheric air alveoli, deoxy blood, oxy blood, tissue. 159, 104, 40, 95, 40, 159, 104, 159, 104, 40, 95, 40। आपको पहले ये याद रहना जरूरी है। पहले तो एटमॉस्फेरिक एयर, फिर आया डीऑक्सी ब्लड, ऑक्सी ब्लड, फिर सॉरी देखो मैंने गलत कर दिया, पहले एटमॉस्फेरिक एयर, फिर एल्वियोली में जाएगा ना, फिर डीऑक्सी ब्लड, फिर ऑक्सी ब्लड, फिर टिश्यू। एटमॉस्फेरिक एयर में 159 O2 के लिए, एल्वियोली में 104, डीऑक्सी ब्लड जो है उसमें 40, ऑक्सीजन ब्लड 95, टिश्यू में 40। तो ये रिपीट करो, O2 159, 104, 40, 95, 40, 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 O2 159, 104, 40, 95, 40। आपको ऐसे याद रखना है, लेकिन मैं इतने बार लिख चुका हूँ आप लोगों के लिए, आप ऐसे याद रखिए। चलिए अब फिर से लिखो, एटमॉस्फेरिक एयर एल्वियोली, डीऑक्सी ब्लड, ऑक्सी ब्लड, टिश्यू। एटमॉस्फेरिक एयर में अब है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 0.3, 40, 45, 40, 45। ये और भी इजी है, 0.3, 0.3, 40, 45, 40, 45, 0.3, 40, 45, 40, 45, 0.3, 40, 45, 40, 45, 0.3, 40, 45, 40, 45, 0.3, 40, 45, 40, 45, 0.3, 40, 45, 40, 45, 0.3, 40, 45, 40, 45, 0.3, 40, 45, 40, 45, 0.3, 40, 45, 40, 45, 0.3, 40, 45, 40, 45। ऐसे करके आप याद रख सकते हो। CO2 के लिए भी मैं लिख डाला। चलिए नेक्स्ट है डायग्राम, देख लीजिए कौन किसको क्या बोलते हैं। तो पार्शियल प्रेशर जब जाता है
Similarly, हम पढ़ते हैं a gradient present for CO2 in opposite direction from tissues to blood and blood to alveoli. As the solubility of carbon dioxide is 20 to 25 higher than that of CO2. Sorry, solubility of O2. Solubility of O2 is 20 to 25% times higher than CO2, so that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of O2. The diffusion membrane made up of three major layers. तीन major layers से diffusion membrane बना है. That is namely the thin squamous epithelium of alveoli, the endothelium of alveolar capillaries, and the basement substance. Squamous epithelium of alveoli, the endothelium of alveolar capillaries, and the basement substance. तीनों चीज़ों से बना है वो जो layer है. In between them, however, its total thickness is much less than a millimeter. Therefore, all the factors in our body are favorable for diffusion of O2 and CO2 to the tissue and that of CO2 from tissues to alveoli. तो बॉडी में जितना भी आपका सब है काम वो फेवरेबल है O2 और CO2 पे डिफ्यूजन के लिए. अब एक स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. Red blood cell, basement substance, there is the yellow part, alveolar wall, 1 cell thick, here alveolar cavity. Next is transport of gases. चलिए ये थर्ड लास्ट टॉपिक है. इसके बाद इसको करने में हमको 10 मिनट लगेगा, फिर हम लोग निकल जाएंगे. उसके पहले 5 मिनट ब्रेक ले लीजिए आप लोग.
चलिए चलिए शुरू करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। ब्लड जो है वही मीडियम है ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 और CO2 का। About 97% of O2 is transported by RBCs in the blood। 97% जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है RBC के द्वारा ब्लड में। The remaining 3% of O2 is carried in a dissolved state थ्रू प्लाज्मा। प्लाज्मा के थ्रू बाकी रिमेनिंग जो है वो कैरी किया जाता है। Okay, nearly 20 to 25% of carbon dioxide is transported by RBCs, whereas 70% of it is carried as bicarbonate। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अगर बोले तो 70% जो है वो RBC ट्रांसपोर्ट करता है एज अ बाइकार्बोनेट। About 7% of CO2 is carried by dissolved state in plasma। तो 7% जो है वो डिजॉल्व स्टेट ऑफ प्लाज्मा में कनेक्ट थ्रू जाता है। ये था मोटा आइडिया। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हेमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन containing pigment present in RBC। Oxygen can bind with hemoglobin in a reversible manner to form oxyhemoglobin। Each hemoglobin molecule can carry a maximum number of 4 molecules of O2। Binding of oxygen with hemoglobin is primarily related to partial pressure of O2। Partial pressure of CO2, hydrogen ion concentration and temperature are the other factors which can interfere with this binding। A sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with O2 is plotted against the PO2। This curve is called oxygen dissociation curve and is highly useful in studying the effects of factors like PCO2, H plus concentration and binding of PO2 with hemoglobin। एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करता है टिश्यू में जाने के लिए। इन द एल्वेoli when there is high PO2, there is alveoli में obviously high PO2 होगा, low PCO2 होगा, lesser H plus concentration and lower temperature। टेम्परेचर भी लोअर होता है। The factors are all favorable for the formation of oxyhemoglobin। तो एल्वेoli में सारे ऑक्सीहेमोग्लोबिन बनने के लिए ही फैक्टर्स रहते हैं। whereas in tissue where low PO2, high PCO2, high PCO2 obviously वहाँ पर जाके कैटाबोलिज्म करके high PCO2 हो जाता है, high H plus concentration are favorable for dissociation of oxygen and form oxyhemoglobin। This clearly indicates that O2 gets bound to hemoglobin in the lung surface and get dissociated at the tissue। ये कॉमन सी बात है। Every 100 ml of oxygen blood can deliver around 5 ml of O2 to tissue under normal physiological condition। अगर 100 ml ब्लड में डिलीवर करता है 5 ml ऑक्सीजन टू द टिश्यू अंडर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। बस इतना ही था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Carbon dioxide is carried by hemoglobin as carboaminohemoglobin about 20 to 25%। This binding is related to partial pressure of CO2। PO2 is a major factor which could affect this binding obviously। When PCO2 is high and PO2 is low in the tissue, more binding of carbon dioxide occurs।
whereas when the PCO2 is low and PO2 is high, as in the alveoli, dissociation of CO2 from carbohemoglobin takes place. CO2 is bound to hemoglobin takes from the tissue is delivered at the alveoli. RBCs contain a very high concentration of the enzyme carbon ammonic anhydrous and minute quantities of the same is present in the plasma too. Thus, enzyme facilitate the following reaction in the both direction. At the tissue site where partial pressure of CO2 is high due to catabolism, CO2 diffuses into blood, RBC and plasma and forms HCO3 minus and H plus. At the alveolar site where PuCO2 is low, the reaction proceeds in the opposite direction, leading to the formation of PCO2 and H2O. Thus, CO2 trapped as bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli is released out as CO2. Every 100 ml of deoxygenated blood carry 4 ml of CO2 to the alveoli. 4 ml of CO2 निकलता है, मतलब कम ही, ऑक्सीजन ज़्यादा. हाँ हाँ. CO2 is carried by hemoglobin as carbomonohemoglobin. This about 20 to 25%. This binding is related to the partial pressure of CO2. PO2 is a major factor which could affect this binding. When PCO2 is high and PO2 is low in the tissue, more binding of carbon dioxide occurs. Whereas when PCO2 is low and PO2 is high in the alveoli, dissociation of carbon dioxide from carbomonohemoglobin takes place. Carbon dioxide which is bound to hemoglobin from the tissue is delivered at the alveoli. RBC contain a very high concentration of the enzyme carbonic anhydrous and minute quantities of the same is present in the plasma too. This enzyme facilitates the following reaction. At the tissue site where partial pressure of CO2 is high due to catabolism, CO2 diffuses into blood and plasma and form HCO3 minus and H plus. At the alveolar site where PCO2 is low, the reaction proceeds in the opposite direction, leading to formation of CO2 and H2O. Thus, CO2 is trapped as bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli is released out as CO2. Every 100 ml of deoxygenated blood deliver approximately 4 ml of CO2 to the alveoli. अब रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन. ठीक है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन. Human beings have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demand of the body tissue. This is done by the neural system. तो ह्यूमन बींग का significant ability है to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demand of the body tissue. अपना respiratory rhythm और जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन करने जानते हैं. दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम, अ स्पेशलाइज्ड center present in the medulla region of the brain called respiratory rhythm center is primarily responsible for this regulation. Another center present in the pons region of the brain. अच्छा, ये जो मेड्यूलर रीजन में रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी रिदम, ये मेड्यूलर रीजन में होता है. ठीक है, मेड्यूलर रीजन में होता है और इसको रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोला जाता है. ये बहुत क्वेश्चन में आता है और कंफ्यूजन भी हो जाता है कभी कभी. तो दिस इज डन by the neural system, a specialized center present in the medulla region
of the brain called respiratory rhythm center is primarily responsible for this regulation. Another center present in the pons region of the brain, अनदर सेंटर एक है पॉन्स रीजन में है न्यूमेटिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोला जाता है। कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये मॉडरेट कर सकता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर, न्यूरल सिग्नल जो है इस सेंटर के कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पिरेशन एंड देयर बाय ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, ये ऑल्टर कर सकते हैं। केमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर। ओके, न्यूमोटैक्सिक अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन, और एक सेंटर है जो कि पॉन्स रीजन में है, उसको बोला जाता है न्यूमोटिक सेंटर। कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को ये भी मॉडरेट कर सकता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोला जाता है। न्यूरल signal from this center can reduce the duration of inspiration, न्यूरल सिग्नल जो है ये सेंटर के इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कम कर सकता है एंड देयर बाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। तो जो पॉन्स में रीजन है वो न्यूरल सिग्नल जो इंस्पिरेशन का है वो कम कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अ केमोसेंसिटिव एरिया is situated adjacent to the rhythm center, एक केमोसेंसिटिव एरिया है जो कि एडजेसेंट सिचुएटेड है रिदम सेंटर का। हाईली सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयंस, एक केमोसेंसिटिव एरिया है एडजेसेंट साइट पर रिदम सेंटर के, वो हाईली सेंसिटिव है कार्बन डाइऑक्साइड के और हाइड्रोजन आयंस के। इंक्रीज इन दिस सब्सटेंस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर, अगर आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड आ गया तो उसमें ये इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज इन दिस सब्सटेंस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर, ठीक है। व्हिच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट, तो ये क्या करेगा, नेसेसरी एडजस्टमेंट करेगा। अगर आपका ब्लड में या बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है तब ये नेसेसरी एडजस्टमेंट करेगा। which in turn can signal the rhythm center, तो इंटर्न और रिदम सेंटर का सिग्नल चला जाएगा to make necessary adjustment in the respiratory process by which this substance can be eliminated, फिर वहाँ पे एडजस्टमेंट होगा ताकि आपका जो इंस्पिरेशन रेट है वो बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए, वो करके वो ब्लड बॉडी निकलना चाहेगा। ये बॉडी ऐसा ही सिस्टम में तैयारी है। Receptors associated with aortic arc and carotid artery also can recognize changes in CO2 and H plus concentration, वहाँ पर भी रिसेप्टर्स हैं, कितने कमाल है देखो। And send necessary signal to the rhythm center for remedial action. The role of oxygen in the regulation of the respiratory rhythm is quite insignificant. तो ये जो रोल है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो ये था रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। चलिए एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। ह्यूमन बींग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यू। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द रीजियन, specialized center present in the medulla region of the brain called respiratory rhythm center is primarily responsible for this regulation, ये primarily responsible है ये ऐसा regulation के लिए। Another center present in the pons region of the brain called pneumotaxic center, तो एक medulla में है और एक pneumotaxic center can moderate the function of the respiratory rhythm center
Neural signals from this center can reduce the duration of the inspiration and thereby can alter the respiratory rate. ये respiratory rate को alter कर सकते हैं, ठीक है। एक केमोसेंसिटिव एरिया है जो कि एडजेसेंट टू द rhythm center, which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ions. Increase in this substance can activate this center, which in turn can signal the rhythm center to make necessary adjustment in the respiratory process, by which this substance can be eliminated. Receptors associated with aortic arc and carotid artery also can recognize the changes in carbon dioxide and H plus concentrations and send necessary signal to the rhythm center for remedial actions. The role of oxygen and the disorder of respiratory system, it is the last topic. Okay. Asthma is a difficulty in breathing causing wheezing due to inflammation of bronchi and bronchioles. Asthma is a difficulty in breathing causing wheezing due to inflammation of bronchi and bronchioles. ये ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लेमेशन कर देता है, ठीक है। ये ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लेमेशन कर देता है। एम्फीसेमा इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर। ये एक क्रोनिक डिसऑर्डर है इन विच एल्वेलर वॉल्स आर डैमेज्ड। एल्वेलर वॉल्स डैमेज्ड होता है। वन ऑफ द मेजर कॉज इज सिगरेट स्मोकिंग। अगर आप सिगरेट पीते हो तो आपको एम्फीसेमा होने का चांस है, क्योंकि ये एल्वेलर वॉल्स को डैमेज करता है। एंड थर्ड है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज involving grinding or stone breaking, so much dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope with the situation. Long exposure can give rise to inflammation leading to fibrosis and thus causing serious lung damage. Workers in such industries should wear protective mask. तो ये था कुछ डिजीजेस, बस फिर समरी है, बस इतना ही आज के लिए। आज थोड़ा लेट हो गया था वीडियो डालने में, लाइव आने में। कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बायोलॉजी में, दूसरा चैप्टर, नया चैप्टर, वो भी वन शॉट। आज के लिए इतना ही, और इसका क्वेश्चंस हम कल करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू अगेन, गुड नाइट।